नमस्कार वेलकम टू श्री काया एकेडमी। सो लास्ट क्लास रे हमें क्लास 7 एनसीईआरटी बुक आवर पास्ट 2 रो फर्स्ट चैप्टर रो किछिटा पार्ट पढ़थिले। तो तार फर्स्ट चैप्टर टी रो किछिटा पार्ट हमें लास्ट क्लास रे पढ़थिले। सो सेटा को टिके हमें रिकॉल कर दबा। सो फर्स्ट चैप्टर टी थिला हमर इंट्रोडक्शन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 इयर्स। तो 1000 वर्ष रे कोन चेंजेस हिची सेटा हमें लास्ट क्लास रे पढ़थिले। तो चलंदो सेही चैप्टर टी को हमें कंटिन्यू करिवा। यार फुल वीडियो देखिबा पई हमर चैनल श्रीका एकेडमी को सब्सक्राइब करंतु एवं फुल वीडियो देखंतु। सो आमे देखले जे 1000 इयर्स रे केते केते चेंजेस हेछि, किपरि लैंग्वेजेस रो चेंजेस हेछि, किपरि मैप्स रो चेंजेस हेछि, से विषय रे आमे जानले। हिस्टोरियन माने किपरि निजरो हिस्ट्री लिखिबा पई को सोर्स को से माने कंसीडर करंती, से विषय रे मध्ये हम लास्ट पार्ट रे पढ़थिले। सो दिस पार्ट रे आमे पढ़िबा किपरि भाबे रीजन और एम्पायर आम हिस्ट्री को अफेक्ट करता है, हिस्ट्री किपरि रीजन और एम्पायर को कंसीडर करता है। सो रीजन और एम्पायर विषय रे आज आमे पढ़िबा। सो लैंड स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोलर्स जोटा कि आमर चैप्टर 2 रे रिप्रेजेंट करा जायछि, एवं तुगलक्स जोटा कि चैप्टर 3 रे रिप्रेजेंट करा जायछि, एवं मुगल्स जोटा कि चैप्टर 4 रे रिप्रेजेंट करा जायछि। से माने मेनी रीजन्स कवर करथिले बोली एथरे लिखा जायछि। सो रीजन और एम्पायर विषय रे आमे पढ़िबा। A Sanskrit Prasasti, see chapter 2 for an example of Prasasti praising the Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban, explained that he was the ruler of a first empire that stretched from Bengaluru in the east to east रे सेटा कोजेन स्ट्रेच हेतला, ईस्ट रे सेटा बेंगल को स्ट्रेच हेतला, बेंगल इन द ईस्ट टू घानी और Gajana in Afghanistan in the west and included all of South India Dravidas। तो एटा होची तांकर ancient names जोटा कि एठी यूज करा जायछि। The people of different regions Kauda, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra and Gujarat apparently fled before his armies। So एटा से गियासुद्दीन बलबान का विषय रे रिप्रेजेंट कला। सो एटा तांकर एम्पायर रो किछिटा चित्र मैप 3 रे एठी लिखा जायछि। provinces of Delhi Sultanate during Muhammad Tughlaq's region, according to Egyptian source Masalik al-Abasar of Shihabuddin Umari। सो ये जो आम पढ़िले एटा गियासुद्दीन मोहम्मद कर समय रे, गियासुद्दीन बलबान कर समय रे किपरि तांकर रीजन और एम्पायर थिला से विषय रे रिप्रेजेंट करथिला, एवं कोटू को जे तांकर एम्पायर टा एक्सपैंड करथिला, एटा से विषय रे रिप्रेजेंट करा जायछि। Then Kola regard these as exaggerate claim of conquests. At the same time, they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent। तो से कहिला रूलर्स कहीं की डिफरेंट पार्ट ऑफ द सबकंटिनेंट को कंट्रोल करिया पे ट्राई करती, एटा से विषय रे आमे वर्तमान आगु को पढ़िबा। द व्हाई दे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग about the different parts of the subcontinent। then आमे जिबा पढ़िबा पे लैंग्वेज एंड रीजन। सो लैंग्वेज एंड रीजन ने से लिखला। In 1318 the poet Amir Khusro noted that there was a different language in every region of this land। जेमिति की एग्जांपल ले से लिखि चंदी, गोटे अछि सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, दबर समृद्धि in southern Karnataka, Telangani in Andhra Pradesh, Gujari in Gujarat,
Malbari in Tamil Nadu, Gauri in Bengal, Awadhi in eastern Uttar Pradesh, Hindadvi in area around the Delhi. Amir Khusrau went on to explain that in contrast to these languages, there was Sanskrit which did not belong to any region, and it was an old language and common people do not know it. Only the Brahmanas do. The common people ए language टाको जानी नथिले, ब्राह्मण माने ही only Sanskrit को जानिथिले. So Sanskrit को जानिथिले को माने only Brahmins. So you have to note it down. Make a list of languages mentioned by Amir Khusrau. Prepare another list of names of languages spoken today in the regions he mentioned. Underline the names that are similar and circle those that are different. तो ये गोटे एक्सरसाइज करिया को देछि कि से को लैंग्वेज विषय रिप्रेजेंट करथले. तो कौन से लैंग्वेज गुडा थिला? तो से लैंग्वेज गुडा थिला सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, Debar Samruddhi in southern Karnataka, Telangani in Andhra Pradesh, Gujari in Gujarat, Mabari in Tamil Nadu, Gauri in Bengal, Awadhi in eastern Uttar Pradesh and Hindavdi in the area around Delhi. तापरे आउ गोटे कहितला कि संस्कृत इज बेसिकली यूज्ड बाय द ब्राह्मण्स. तो ए सब लैंग्वेज विषय रिप्रेजेंट करा जायछि. तो से कहि कि डिड यू नोटिस दैट द नेम्स बाय व्हिच लैंग्वेजेस आर नोन हैव चेंज्ड ओवर टाइम. तो से कहले कि किछिटा लैंग्वेज रो ना ओवर द टाइम चेंज जायछि. सेटा हमें आगु पढिबा. By 700 many regions already possess distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics. You will learn more about these chapters in chapter 7. They were also associated with specific ruling dynasties. So they represented से कहले कि chapter 7 now extra जिनसा पढ़िबा और तांकर specific ruling dynasties रहिछि से विषय रे हमें आगु को पढ़िबा. ruling dynasties कोन रहिछि हम आगु को पढ़िबा. There was considerable conflict between these states. Occasionally dynasties like the Koko dynasty set example लिखी दीजिए. Dynasties like Cholas, Khaljis, Tughlaqs and Mughals were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse regions. Not all these empires were equally stable or successful. So से लिखला जे जो सब empires व dynasties हमारा बना है तो सेगुड़ा किए बनी चंदी Cholas, Khaljis, Tughlaqs and Mughals. से माने से dynasty के बनी चंदी. They were able to build an empire. So सेटी लिखा है कि they were able to build an empire that were pan-regional, spanning and diverse regions. The diverse regions रहे थे. हमारा pan-regional plannings थिला and diverse regions area रे थिला. And not all these empires were equally stable or successful. So सबु जाका empire जेते सब empire विषय रे represent करा जायछि. सबु जाका empire equally successful किंबा stable, equally successful किंबा stable नथिले. किछि जण बहुत successful थिले आ किछि जण कम successful थिले. तो next देखिबा. When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional states. तो से लिखला जे जेतेबेले Mughal Empire 18th century रे जेतेबेले Mughal Empire decline हे गला मतलब आ Mughal Empire शासन रे रहिलानी. It led to the re-emergence of regional states. तो से जगह रे कौन हेगला regional states मानकर re-emergence हेगला.
But years of imperial and pan-regional rule had altered the character of regions. Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them. And this was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions. तो से कहला कि across the most of the subcontinent, so जिते सब subcontinent थिला जोगुड़ा के मुगल मानकर अंडर रे थिला, मुगल शासन रो अंत परे डिक्लाइन हे गला परे these regions were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them. तो जो सब legacy ता ऊपर rule करुथिले मुगल शासन आगुरु सेमानंका हाथकु सेटा पड़ेला. And this was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions. Distinct and shared tradition, तो tradition जो follow हिला विभिन्न प्रकार tradition follow वाला और एक दूसरे से तो share करके सब tradition follow करथिले. And in the realms of the governance, the management of the economy, allied cultures and languages. So economy, culture, language सेमानंकर many distinct form रे हैला and shared tradition रे हैला the realm of governance, economy, allied culture आउ रहिला language एवडा सब मैनेजमेंट करागला सेही सब जो जिंस legacies माने जो माने आगुरु नथिले से माने शासन को आस्तिले एंड से जिंसटा को आउथरे start कले. So distinct cultures develop कला. Through the 1,000 years between 700 and 1750, the character of the different regions did not grow in isolation, and these regions felt the impact of larger pan-regional forces of the integration without ever quite losing their distinctiveness. तो ये कौन कहे चेष्टा कला? These regions felt the impact of the larger pan-regional forces. तो कौन है ना? 700 to 1750 भितरे the character of the different regions did not grow in isolation. So सेमाने एकुटिया बढ़ी पारी नथिले. Isolation ने सेमानंकर किछि सेमति ग्रो हेई नथिला. So सेमाने कोन हैला जेतरे गोटे प्राल रीजनल फोर्सेस काम करिबा स्टार्ट कले. એટલે pan regional forces काम करिबा स्टार्ट कले. So without ever quite losing their distinctiveness. So सेमानंकर जो गोटे स्वतंत्रता थिला से सेटा को affect न करी ग्रो करिया पई ट्राई कले विथ देम. Old and new religions. Next time देखिबा old और new religions भितरे कोन डिफरेंस होछि. So old और new religion में कौन difference होछि अब हमें देखिबा the 1,000 years of history that we were exploring witnessed major developments in religious traditions. People's belief in the divine was sometimes deeply personal, but more visually it was collective. Collective belief in a supernatural agency, religion was often closely connected with the social and economic organization of local communities. So कहला कि supernatural agency, collective belief on any supernatural agency, religion. So what consider kari paribe, religion was often closely connected with the social and economic organization of the local communities. As the social worlds of this group altered, so too did their beliefs. तो सेमानकर social world जेतेले चेंज हे गला तो सेमानकर religious belief चेंज हवा को लागला. It was during this period that important changes occurred in what we call Hinduism today. So से लिखला कि एई सब समय रे किपरि हिंदुइज्म रे चेंज आसला से जिंसडा को आमे एबे कंसीडरेशन को नबा. Today Hinduism रे चेंज आसला due to that, and this included the worship of new deities. तो नुआ नुआ ठाकुरन को पूजा करिबा एथु स्टार्ट हला. The construction of temples, तो स्टार्ट कोठु हला the construction of temples, नुआ नुआ मंदिर तैयारी करिबा. The construction of temples by royalty and the growing importance of brahmanas. तबरे ब्राह्मण मानकर इंपोर्टेंस बढ़िया को लागला. The priests and dominant groups in the society. तो के dominant group थिले in the society? Brahmanas, priests are the dominant groups in the society, and their knowledge of Sanskrit text
तांकर नॉलेज कोथरे थिला संस्कृत टेस्ट रे तांकर जो नॉलेज ता थिला ऑन द ब्राह्मणस इज लॉट ऑफ रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी तो सेमाने को जो संस्कृत ता जणा थिला सेटा तांक पई गोटे लॉट्स ऑफ रेस्पेक्ट आनी दोथला Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige. One of the major developments of this period was the emergence of the idea of bhakti. तो गोटे नुआ word included करा गला bhakti. Bhakti meaning कौन of a loving personal deity that devotees could reach without the aid of priest or elaborate rituals. तो से कौन हला one of the major development of this period was the emergence of idea of bhakti. तो से कहले कि एटा भक्ति द्वारा केमती आमे ईश्वर प्राप्ति करि परिबा जबकि हमकु किछि रिचुअल्स करियो पड़िबोनी आ कोनोसी पूजक बा प्रीस्ट पाखकु जिबाको पड़िबोनी नेक्स्ट चलो देखिबा कोन लिखाइ छी This was also the period when new religions appeared in the subcontinent. तो एटा सही पीरियड थिला जो पीरियड कोन हला नुआ रिलीजन सब आसी की पहुंचले न्यू रिलीजन एंटर्ड द सबकंटिनेंट मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट बॉट द टीचिंग ऑफ होली कुरान कुरान न पढ़ा आरंभ कला टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी तो सेंचुरी टा कोन थिला इन द 7th century Muslims regard the Quran as their holy book so को मानकर होली बुक थिला मुस्लिम मानकर होली बुक थिला कोनटा कुरान as their holy book and accept the sovereignty of the one God Allah whose love mercy and bounty immerse all those who will believe in him without regard to social background तो प्रथमे कोन आसिले कुरान रा आविर्भाव करा गला कुरान को मानकर बुक थिला मुस्लिम्स मानकर थिला many rulers were patrons of the Islam बहुत जन रूलर्स थिले जो माने पैट्रन्स ऑफ कौन थिले इस्लाम थिले एंड उलामा learned theologians and jurists and like Hinduism Islam was interpreted in a variety of ways by its followers and there were the Shia Muslims तो Muslims मानकर variety थाए तो गोटे होची कोन Shia Muslim आ गोटे होची Sunni Muslim other varieties भी थांते जेमते कि हनाफी वगैरह तो who believed that the Prophet Muhammad's son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community. The Muslim community legitimate leader माने को जो माने वंशधर थांती प्रॉपर वंशधर थांती से मानकु बाजे legitimate leader हला Muslim community legitimate leader थिले Ali who was the son of Prophet and the Sunni Muslims who accepted the authority of the कहथिले दि प्रकार मुस्लिम्स थांती से and Sunni the Sunni Muslims who accepted the authority of early leaders khalifas of the community and the succeeding khalifas there were other important difference between the various schools of law Hanafi and Safi mainly in India and in the theology and mystic traditions so आज हमें एतिकी पढ़िले regarding चेंजेस किपरि हेतिला रिलीजियन एम्पायर केमती चेंज होला लोक माने केमती जॉइन कले सो ओडिसा सबुठारु बेस्ट एजुकेशनल कंटेंट पई श्रीकाय एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल श्रीकाय एकेडमी यार नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी हमर यूट्यूब चैनल श्रीकाय एकेडमी रे अपलोड करा जिवो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग